यू नो व्हाट गाइस, गाड़ी फिर से पंक्चर हो गई अगेन। एंड दिस टाइम भी रियर के राइट वाला ही पहिया जो पहले भी पंक्चर हुआ था। और अभी चल रही एकदम घमासान बारिश। में आपको दिखाता हूँ, मतलब एकदम पागलों की तरह। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। एक मिनट, अगर ये आप देख सको, जस्ट टेक अ लुक। बहुत ज़्यादा ये देखो, तगड़ी बरसात का मौसम। एंड हमें अभी बदलना है गाड़ी का टायर, बट इस बारिश में नहीं। वी आर लकी कि हमारी बिल्डिंग के नीचे बेसमेंट है, हम वहाँ पे चेंज करेंगे। यानी अपना ट्राइपॉड सेटअप, ट्राइपॉड सेटअप भी है। आई एम नॉट श्योर कि कितनी आवाज़ आ रही है मेरी वीडियो में, सिर्फ बारिश की आ रही होगी। लेट्स गो इन द बेसमेंट। दैट्स जी एंड गोइंग डाउन। एंड हियर वी हैव रीच्ड। इस तरफ एक गेट है, इस तरफ एक गेट है, ये वाला खोलेगा। ये बारिश का मैनेजमेंट इतना ख़राब है। देखो, यहाँ से बारिश का पानी आ रहा है और यहाँ पे पूरा का पूरा यही वैसे ही है, देखो। एंड इवन दिस इज फुल, इसका भी पानी भर गया। ये रही अपनी गाड़ी एंड ये रहा वापस से फ्लैट टायर। बट आई वाज थिंकिंग कि अभी ये फ्लैट टायर है, गाड़ी एकदम पीछे एकदम चिपक के लगी हुई है। गाड़ी थोड़ी सी आगे कर लेते हैं, फिर विल चेंज दिस। लेट्स गो। एंड गाइस, अनदर अपडेट। बात ऐसी है कि हमने यहाँ पे जो फास्टैग होल्डर लगाया था, दिस वन ओवर राइट हियर, जो अभी है नहीं, वो गिर गया नीचे, समवेयर नीचे ही होगा। अभी जब गाड़ी साफ सफाई करेंगे तब दिखाई देगा। एंड यस, वी स्टिल हैव द टेंट्स ऑन। गाड़ी थोड़ी सी आगे लेते हैं एंड देन विल मूव टू द पंचर पार्ट। लेट्स, यहाँ पे अभी पिलर है, ज़्यादा भी नीचे ले सकते हैं। ओके, ओपनिंग अप द बूट। अभी यहाँ से स्पेयर टायर निकालते हैं। ये हम थोड़ा गाड़ी डेकोरेट करने का सामान रख रखा है, तो वो साफ़ सफाई के लिए कॉलिंग वगैरह। अब ये सब कुछ हटा देते हैं एंड गेट द स्पेयर व्हील आउट। ये रहा पीछे, और यहाँ पे ऐसे एक लॉक होता है जो आपको ऐसे घुमा के निकालना पड़ेगा। एंड वंस इट्स आउट, आप अपना टायर पूरा का पूरा बाहर निकाल सकते हैं। एंड ज़्यादा ही बड़ा होता है, निकल नहीं रहा इजीली। यस, इट्स आउट। ओके, नाउ टाइम फॉर द व्हील। लेट्स सी, मैं एक हाथ से रिकॉर्ड और टायर बाहर निकाल सकता हूँ क्या एट द सेम टाइम? यस, आई कैन। हाँ, एंड वी हैव इट राइट हियर। ये अपना फ्लैट टायर। यार फ्लैट दिख नहीं रहा होगा, लेकिन वंस यू आर दिस एंगल, यस, आप दिख रहा होगा फ्लैट है। दैट्स द वन इन्फ्लेटेड। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, बट द बेनिफिट ऑफ, देखो इसको धो के रखा था, सो इट्स क्लीन राइट नाउ। उतना भी नहीं, बट स्टिल काम के लायक तो है। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा मच्छर है, बट स्टिल वी आर डूइंग इट, क्योंकि बारिश में भीग के बनाने से अच्छा तो यहीं पर है, यहाँ पे बना लूँ। ये वी हैव अप बोथ द टायर्स, यहाँ पे अपना इक्विपमेंट। सो दिस इज स्टैंडर्ड, हर एक कार के साथ आता ही है PDI में, अगर आप, इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ। यहाँ पे धूल भी बहुत है बेसमेंट में। सो दिस इज द जैक। सो बिफोर यू डू एनीथिंग ना, यहाँ पे अभी जो ये नट्स है इन्हें थोड़ा थोड़ा लूज़ करना है, क्योंकि अगर आप बाद में जब जैक लगा के जब हम गाड़ी लिफ्ट करेंगे, तब वो व्हील
के ऊपर कुछ फोर्स नहीं होगा, जब वो हवा में चला जाएगा तब वो इतनी इजीली नहीं होगा निकालने के लिए, इसलिए थोड़ा सा। एंड रिमेंबर इट्स काउंटर क्लॉकवाइज व्हील निकालने के लिए इस डायरेक्शन। सो वंस यू आर लाइक दिस, अब देखो दबा के तो निकलने वाला है नहीं है, इट्स वेरी टाइट। सो इसके लिए एक मेथड है कि आप इसके ऊपर खड़े हो जाओ या फिर पैर से कर दो, गेट सम सपोर्ट एंड स्टैंड ऑन दिस, सी स्टैंडिंग। Once they are loose, तब आप यहाँ पे जैक लगा सकते हैं। जैक लगाने के लिए एक स्पॉट होता है स्पेशल दिया हुआ, सिर्फ वहीं पे जैक लग सकता है। यहाँ पे किक करना है ऊपर की तरफ। यस, आउट, कार इज स्टिल इंटैक्ट, कार को कुछ नहीं हुआ। एंड देन वी विल ग्रैब आवर स्पेयर व्हील, साइड में पड़ा होगा उसको पीछे ले लो, जस्ट अलाइन देम विद इवन। एंड या नट लगाना पैटर्न भी क्रॉस में करना है, सबसे पहले ये वाला देन ये वाला। Once the jack is completely off, इसे वापस से टाइट कर दो पूरा का पूरा नट्स, एंड इट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड क्रॉस के पैटर्न में करना है टाइट, ऐसे एक साथ सारे नहीं करना। स्टार्ट फ्रॉम हियर, देन ऑन द टॉप, देन इन द साइड, देन ऑन द फ्रंट। एंड इफ यू हैव टू मेक श्योर कि टाइट हुआ है कि नहीं कंप्लीटली। And there you are.
पूरा का पूरा पंचर निकल गया गाड़ी में। बट देन इसमें कुछ ऐसी हालत हो गई, पूरे पसीना पसीना हो गया। यहाँ पे कुछ हवा भी नहीं है, यहाँ पे मच्छर कुछ ज़्यादा है। सी यू सून।